कुछ ही समय में स्वचालित प्रमोचन अनुक्रम यानी ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस की शुरुआत की जाएगी। We are close to 20 minutes from the launch. The year 2023 has been a very eventful one for ISRO. Prestigious Chandrayaan-3 has landed safely and softly at the lunar south pole. The historic point of landing has been named Shiv Shakti Point, and the momentous day of 23rd August has been proclaimed as National Space Day. Aditya L1, India's first space-based solar observatory, was successfully launched, which is in the last leg of its journey to reach its special vantage point within the next few days. Ahead of the ambitious Gaganyaan mission, an abort condition was simulated, and crew emergency escape strategy was successfully tested through TVD-1 mission. In all, there were 8 launches. T-minus 20 minutes. Present launch will be the 95th All launch stations, from change SDSE over to Sharp channel 2. and 60th for the workhorse PSLV. 4th time that it is flying in its real configuration. Event 456 completed. Roger. POT to ROD, all radar tracking systems are ready. PSLV C58 XPoSat मिशन में 3 मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें भारत का पहला एक्सरे पोलैरिमीटर आधारित वेधशाला खगोल विज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। चूंकि PSLV सबसे विश्वसनीय और बहुमुखी रॉकेट है, इसलिए इसके चतुर्थ चरण का प्रयोग अंतरिक्ष प्रयोगों के लिए पहले भी किया जाता रहा है और इस बार भी PSLV C58 के 10 ऑर्बिटल पेलोड्स के निर्धार लिए अपने प्रयोग करने के लिए सफर कर रहे हैं। इसमें फ्यूल सेल आधारित ऊर्जा तंत्र भी सम्मिलित है। एक्सपोसैट के प्रक्षेपण के बाद पोएम-3 की प्रक्रिया पहले PS4 जो कि चतुर्थ चरण है, इसमें से बचे हुए प्रणोदक को निकाल दिया जाएगा और इसे हम स्टेज पैसिवेशन भी कहते हैं। The countdown for PSLV C58 XPoSat mission has commenced 25 hours ago, that is at 8 hours 10 minutes in the morning yesterday. The ISRO personnel have been involved in the round-the-clock operations in getting the rocket ready for the launch. The liquid propellants have been serviced and the gas bottles that carry gases for stage commands and pressurization have been charged and pressurized to pre-flight values. Onboard batteries have been charged. The tracking radars and other systems have been verifying their preparedness for the launch event. The satellite and rocket subsystems have been run to ascertain their health through checkup. T-minus 18 minutes. We are 18 minutes away from the launch. Countdown is progressing. Parameters of PSLV C58 launch vehicle are normal and within specifications. The launch vehicle is ready for PSLV C58. Control to node 463 to 467 completed. Mission Director, Roger. जैसा कि हम जानते हैं, PSLV इसरो के एक बहुमुखी रॉकेट है। इसके कुल 5 संस्करण हैं, जिसमें से इस बार यह अपने DL संस्करण का उपयोग में किया जा रहा है। यह संस्करण उपग्रह के भार और मिशन की जरूरतों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। 473, 479 completed. DL विन्यास में प्रथम चरण में कोर बूस्टर के साथ 12 टन के 2 ठोस नोदक वाले स्टेप-ऑन बूस्टर संलग्न रहते हैं। दूसरे चरण में UDMH और N2O4 पर आधारित तरल नोदक वाला चरण होता है। टाइमिंग कंफर्म्ड, एक्सटर्नल होल्ड मोड। VLCC Roger. Satellite director to mission director. Satellite health is normal and satellite is cleared for PSLV C58 XPoSat mission liftoff. Mission Director, Roger. ROD to mission director. Range is ready for PSLV C58 XPoSat launch. Mission Director, Roger. TTC Director to Mission Director. TTC Director confirms readiness of ISTRAC TTC network for supporting PSLV C58 XPoSat mission. Mission Director, Roger. TCTC data loggers are on at Shavan and SHA-2 stations. Noted. अभी आपने देखा स्पेस क्राफ्ट डायरेक्टर, रेंज डायरेक्टर। Mission Director.
Mission Readiness Review and Launch Authorization Board has already given clearance for proceeding with the countdown and launch of PSLV C-58 XPoSat mission. All operations in the countdown sequence till automatic launch sequence have been completed satisfactorily. Based on the clearance obtained from launch vehicle, spacecraft, range and ISRO network station and prevailing favorable weather conditions, Mission Director hereby authorizes to initiate launch operation sequence for the launch of PSLV C-58 XPoSat mission at 9:10 hours IST today, that is 1st of January 2024. All stations to note, Mission Director has given authorization for the launch of PSLV C-58 XPoSat mission. SDS servers activated. Based on the authorization from Mission Director, Vehicle Director hereby authorizes to initiate the automatic launch sequence for the launch of PSLV C-58 XPoSat mission at 9:10 hours IST today, that is 1st January 2024. Automatic launch sequence initiated for PSLV C-58 launch. ALC in auto mode. अभी अभी आपने देखा उपग्रह निदेशक, रेंज निदेशक, टेलीमेट्री एंड कमांड निदेशक, यान निदेशक सभी ने अपने तंत्रों की सूचना मिशन निदेशक को दी थी। उसके पश्चात मिशन निदेशक संतुष्ट होने पर अपना अनुमोदन प्रदान कर चुके हैं और इसके पश्चात यान निदेशक ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू कर दिए हैं। We are closer to the launch and the automatic launch sequence has been initiated. Based on the readiness of all contributing and participating systems like the launch vehicle, satellite, range, downrange tracking stations, the Mission Director Dr. M. Jayakumar authorizes the launch. The Vehicle Director then initiates the automatic launch sequence 14 minutes before T0, which is a capsule of very essential checks to verify the systems of launch T-minus vehicle. 14 minutes. Very close to the scheduled launch time, control is passed on to the onboard computers. यह मिशन पूर्वी दिशा का मिशन है, इसलिए हमारे शार, पोर्ट ब्लेयर, ब्रूने और बायक स्थित रडार स्टेशंस इस यान पर निरंतर अपनी नजर बनाए रखेंगे। मुख्य उपग्रह के प्रमोशन के पश्चात कक्षा की ऊंचाई 650 किलोमीटर से घटाकर 350 किलोमीटर तक लाई जाएगी। ऐसा चतुर्थ चरण को पुनः प्रज्वलित कर किया जाएगा। हम इसे सेकंड ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। इस दौरान त्रिवेंद्रम तथा शार स्थित रडार स्टेशंस भली भांति हमारे यान को ट्रैक करेंगे। PSLV C-58 पूर्णतः सज्ज है अपने मिशन को पूरा करने के लिए। यहाँ विजिटर्स गैलरी श्रीहरिकोटा में भारी संख्या में दर्शक उपलब्ध हैं। The PSLV C-58 rocket standing majestically at the first launch pad. On your screens, Secretary DOS and Chairman. PS4 activation completed. अब आप सभी दर्शकों के सामने प्रस्तुत है एक संक्षिप्त PSLV C-58 का इंटीग्रेशन वीडियो। T-minus 12 minutes. Now we bring to you an integration video of how the rocket has been assembled at the Satish Dhawan Space Center. You can see on your screens the beginning of the launch campaign with the flagging off of the nozzle end segment for the core motor. In the PSLV integration facilities, the stage 1 motor is being assembled segment by segment. The S139 motor consists of 5 segments, a nozzle end segment, 3 middle segments and 1 head end segment.
two middle segments had been assembled, and this is the head-end segment, and here's the igniter. C58, being a DL version, has two strap-on motors, which are PSOM XL motors carrying 12.2 tons of solid propellant each. This is being brought to the PSLV integration facilities, where it is tilted and integrated with the core motor. These are the two strap-ons. The SITVC tanks being integrated now. SITVC stands for Secondary Injection Thrust Vector Control, for the control of stage 1, and this is RCT, Reaction Control Thruster Related Systems. Here you can see the interstage being carefully hoisted with the help of facility electrically operated overhead crane and being integrated to the core motor. And the second stage, PS2, which is a liquid stage, is prepared in a separate assembly building, being tilted. Vikas engine powers second stage of PSLV. It is being integrated with the core motor, and two stages are ready. Here, the PSLV is being transported in its semi-integrated condition from the PSLV launch integration facilities to the mobile service tower. आपने देखा प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण का समायोजन पूर्ण कर यह तृतीय चरण को तथा चतुर्थ चरण को एक साथ समायोजित किया जा रहा है। इस समायोजन को MST मोबाइल सर्विस टावर पर लाया जाता है। सभी कार्य पूर्ण कुशलता तथा दक्षता के साथ संपन्न किए जाते हैं। यह है हमारा PSLV C58 का उपग्रह XPoSat। इसमें दो मुख्य निदभार हैं, जिसका नाम है XSPECT और POLX। पूर्ण परीक्षित कर XPoSat को भी पेलोड एडेप्टर के साथ चतुर्थ चरण के ऊपर में समायोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही पोयम के लिए 10 नितभारों को चतुर्थ चरण के साथ समायोजित कर दिया गया। इस समायोजन को मोबाइल सर्विस टावर पर लाकर PSLV रॉकेट के साथ समायोजित किया जा रहा है। यह ऊष्मा कवच हीट शील्ड और इस तरह तैयार है PSLV C58 रॉकेट। यहां से परीक्षण शुरू होते हैं और परीक्षण पूर्ण होने के पश्चात प्रमोशन की स्थितियां प्राप्त की जाती हैं और प्रमोशन किया जाता है। वर्तमान में ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है और अब हम उड़ान से 7 मिनट की दूरी पर। Studying of celestial objects unveils several mysteries. 7 minutes. In September 2015, ISRO had launched first dedicated Indian astronomy mission called ASTROSAT, aimed at studying celestial sources in X-ray, optical and ultraviolet spectral bands simultaneously. One of its objectives was to detect new briefly bright X-ray sources in the sky. While the ASTROSAT is still healthy and its payloads are continuing to provide valuable scientific data, XPoSat is a step ahead in the study. It is expected to unravel some extreme phenomena. The astronomy community is particularly enthused about the prospect of systematic exploration into the polarization of X-rays emitted from astronomical sources. This aspect of study is the latest emergence in observational astronomy. Earlier tools included imaging,
studying the fluctuations of light from source, T-minus 6 and minutes. spectroscopy, which is basically a study of spectrum of electromagnetic radiation emanating from celestial bodies. Earlier observations could reveal chemical External composition, power withdrawn. temperature, distance, velocity, and luminosity. Analyzing X-ray polarization signature enables measurement of deeper insights through manifestation of processes Flight coefficient generating loading these initiated. X-rays having distinct signatures within appropriate energy bands, depending on the involved energetics. The XPoSat mission Flight by coefficient ISRO loading completed. is specifically designed to investigate such X-ray polarization signatures emanating from bright X-ray sources. The primary payload, polarimeter instrument in the X-rays or POLX, operates to measure polarimetry parameters in the medium X-ray energy range of 8 to 30 kiloelectron volts photon. T-minus 5 minutes. The first payload for this energy band. Its collimator plays a crucial role to ensure that only one bright source is within the field of view for most observations. The second payload, XPECT, X-ray spectroscopy and timing instrument, is designed to offer fast timing and excellent spectrometric resolution in soft X-rays, that is 0.8 to 15 kiloelectron volts energy band. अब हम उड़ान से 4 मिनट 22 सेकंड की दूरी पर। आइए अब आपको इस उड़ान के घटनाक्रम से संक्षिप्त में परिचय देते हैं। सर्वप्रथम रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर्स T-3 सेकंड्स पर प्रज्वलित किए जाएंगे। उसके बाद T0 पर कोर बूस्टर प्रज्वलित होगा और इसके 400 मिलीसेकंड के पश्चात सॉलिड स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स को प्रज्वलित किए जाएंगे। इस समय यान का उत्थापन होगा। लगभग 23 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेने पर स्ट्रैप-ऑन के कार्यकाल समाप्त हो जाएंगे और इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। कोर बूस्टर S139 बूस्टर प्रज्वलित रहकर कुछ 110 सेकंड तक प्रज्वलित रहकर यान को 57 किलोमीटर की ऊंचाई प्रदान करेगा तथा 1.62 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति। ऑनबोर्ड कंप्यूटर इन फ्लाइट मोड। प्रथम चरण के कार्यकाल के पश्चात द्वितीय चरण को प्रज्वलित किया जाएगा और प्रथम चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा। द्वितीय चरण 152 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा और इस दौरान यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत चला जाएगा और इसी दौरान ऊष्मा कवच को भी यान से पृथक कर दिया जाएगा। PS2 द्वितीय चरण के कार्यकाल के पश्चात इसे पृथक कर दिया जाएगा और इसके पृथकन के 1 सेकंड के पश्चात ही तृतीय चरण, जो कि उच्च निष्पादन वाला HPS3 चरण है, ठोस नोदक पर आधारित चरण, इसका प्रज्वलन शुरू हो जाएगा। तृतीय चरण का प्रज्वलन काल 123 सेकंड का होगा और इस समय यान 206.8 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 7.23 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति प्राप्त कर चुका होगा। तृतीय चरण के कार्यकाल के पश्चात तृतीय चरण तथा चतुर्थ चरण सम्मिलित होकर कोस्ट फेज की शुरुआत करेंगे। इस दौरान कोई भी प्रज्वलन नहीं हो रहा होगा और यह कोस्ट फेज करीब 200 सेकंड्स तक जारी रहेगा। इसके पश्चात तृतीय चरण को पृथक कर दिया जाएगा, लेकिन चतुर्थ चरण के प्रज्वलन से 425 सेकंड तक यह कोस्टिंग फेज जारी रहेगा। T-2 minutes. कोस्टिंग फेज समाप्त होते ही चतुर्थ चरण का प्रज्वलन होगा और यह वह अंतिम चरण है जो XPoSat उपग्रह को निर्धारित कक्षा पर लेकर जाएगा और उद्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित करेगा। We are very close to the launch and let me quickly run you through the flight events. About the nominal flight timelines for the PSLV C-58 XPoSat mission. At T0, which is scheduled at 9 hours 10 minutes, the first stage PS1 ignites and followed by the ignition of the two strap-on motors 400 milliseconds later. The strap-ons continue to burn for 70 seconds, after which they are separated from the ongoing launch vehicle. The PS1 stage, that is the core S139, separates 109 seconds into the flight.
By this time, the launch vehicle would have gained an altitude of 57 kilometers and acquired a relative velocity of 1.6 kilometers per second. All subs armed. The stage 2 ignites All sequences after armed. PS1, continues to burn for 152 seconds. Operational time for PS3 is 124 seconds. VHPP open. PS4 will operate for 247 seconds. Then the injection parameters will be Minus 30 achieved. seconds. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. VSPP opened. Minus 20 seconds. Minus 15 seconds. प्रमोशन से 15 सेकंड की दूरी पर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lift Plus off 5 normal. Bright morning of the New Year's Day made brighter by a majestic liftoff. PSLV C-58 carrying India's X-ray polarimetric satellite towards its destination. Due to tracking, जी हाँ, इस वर्ष का प्रथम प्रमोशन Plus 20 seconds. श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोशन मंच से PSLV C-58 का हमने सफलतापूर्ण उत्थापन देखा और यह अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर निरंतर बढ़ता हुआ। प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। Nominal thrusting by PS1 stage. Nominal burn time for the strap-ons is 70 seconds and the core motor for 109 seconds. इस समय यान अपने अधिकतम गतिक दाब से गुजरता हुआ। प्रथम चरण का कुल प्रज्वलन काल 110 सेकंड का होगा। तत्पश्चात इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। Sharp's tracking station currently tracking the flight. Ground lid strap-on separated. दोनों स्ट्रेपॉन्स को यान से पृथक कर दिया गया है तथा कोर बूस्टर अभी भी प्रज्वलित है। Presently, the core S139 motor alone thrusting. The strap-ons have been separated. Normal. This stage will carry the rocket to 57 kilometers altitude and add 1.6 kilometers per second as a relative velocity. इस घटनाक्रम पे अगला है प्रथम चरण का पृथकन तथा द्वितीय चरण का प्रज्वलन। First stage separated. Second stage engine started. Closed loop guidance initiated. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। प्रथम चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक किया गया है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। There is a confirmation from the Range Operations Director that the second stage has commenced its operation. Second stage performance normal. And as the altitude right now is almost at the verge of the dense atmosphere, closed loop guidance has been initiated. The next flight event is eagerly awaited. The next flight event is payload fairing separation. द्वितीय चरण का निष्पादन सामान्य है। इसका कार्यकाल 152 सेकंड का होगा और इस दौरान यह कुल 800 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर ले जाता है। Plus 3 इसकी minutes. पुष्टि हो चुकी है। ऊष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया गया है। Second stage performance normal. There is a confirmation of payload fairing separation and a nominal thrusting by the second stage of PSLV. द्वितीय चरण तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें UDMH और N2O4 को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में विकास इंजन नामक इस द्वितीय चरण के इंजन द्वारा प्रणोद उत्पन्न किया जा रहा है। By the time PS2 completes its operation, the altitude of the launch vehicle will be 161 kilometers and relative velocity of 4.5 kilometers per second. Current altitude close to 150 kilometers.
Second stage performance normal. Plus 4 minutes. यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ Shah tracking station continues to track. Second stage separated. Third stage ignited. द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है तथा ठोस नोदक वाले तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Third stage performance normal. The performance of third stage is reported to be nominal. The PS3 stage based on this HTPB based solid propellant. It carries 7.6 tons of propellant. यान की ऊंचाई निरंतर बढ़ती हुई वर्तमान में यह 170 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है तथा सापेक्ष गति 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। तृतीय चरण HPS3 हाई परफॉर्मेंस थर्ड स्टेज कुल 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है और यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर ले जा रहा है। Shah and Port Blair tracking stations are currently tracking the vehicle trajectory. Third stage performance normal. During the operation of PS3, the rocket gains an altitude of 45 kilometers. Relative velocity increases from 4.5 kilometers per second to 7.2 kilometers per second. तृतीय चरण में कुल 7.66 टन का प्रणोद होता है और इसका कार्यकाल 123 सेकंड का होगा। इसके कार्यकाल के पश्चात PS3 का कोस्टिंग फेज शुरू हो चुका होगा। सभी दर्शकगण यहां उत्साहित इस मिशन के सफलता के लिए अब कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे तृतीय चरण। Third stage action completed. तृतीय चरण का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और इसके पश्चात ही combined hosting for approximately 200 seconds. इसके साथ ही तृतीय तथा चतुर्थ चरण सम्मिलित होकर कोस्टिंग फेज जारी है। There is a confirmation of expected performance by the PS3 stage and currently the thrust has been cut off but the vehicle is coasting with the PS3 still intact. The separation of PS3 has not yet taken place. Vehicle performance normal. यह कोस्टिंग फेज 200 सेकंड्स तक जारी रहेगा। उसके पश्चात तृतीय चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा। The combined coasting continues for 200 seconds. Thereafter, the separation of PS3 takes place, but PS4 continues to coast for another 400 seconds. During the coasting phase of flight, the relative velocity reduces from 7.2 kilometers per second to 6.7 kilometers per second, and as a result, close to 400 kilometers increase will be observed in the altitude. एक्सपोसेट विभिन्न खगोलीय विकिरण उत्सर्जन स्रोतों जैसे ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे, सक्रिय आकाशगंगा, नाभिक, पल्सर पवन, निहारिका आदि से उत्सर्जित उत्पन्न जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है और इसे समझना खगोलविदों के लिए भी एक चुनौती बना हुआ है। एक्सरे पोलैरिमीटर हमारी समझ में दो और आयाम जोड़ेंगे। यह है ध्रुवीकरण की मात्रा तथा ध्रुवीकरण का कोण और इस तरह यह खगोलीय स्रोतों से उत्सर्जन प्रक्रियाओं को समझने में उत्कृष्ट निदान उपकरण साबित होंगे। एक्सपोसेट द्वारा भारतीय विज्ञान समुदाय की राह पर यह एक प्रमुख अनुसंधान की दिशा है। एक्सपोसेट में दो मुख्य वैज्ञानिक निदभार हैं जिनका नाम है पॉलेक्स और एक्सस्पेक्ट। इस उपग्रह का कुल भार 469 केजी है।
इस मिशन में लगभग 145 केजी के वैज्ञानिक निर्भर अंतरिक्ष प्रयोगों के लिए सफर कर रहे हैं। इन्हें अंतरिक्ष प्रयोग पोएम 3 का नाम दिया गया है। सर्वप्रथम पोएम पीएसएलवी ऑर्बिटर एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल का सफल प्रयोग 30 जून 2022 को पीएसएलवी C53 द्वारा देखा गया था। फिर 22 अप्रैल 2023 को पीएसएलवी C55 द्वारा पोएम 2 का प्रयोग भी हमने देखा। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पोएम 3 के प्रयोग किए जाएंगे। Third stage separated. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। तृतीय चरण को यान से पृथक कर दिया गया है। Vehicle in separated hosting for approximately 425 seconds. Plus 10 minutes. तृतीय चरण के पृथकन के पश्चात चतुर्थ चरण के प्रज्वलन में अभी समय है और इस दौरान PS4 का कोस्टिंग फेज जारी है। यह करीब 400 सेकंड तक जारी रहेगा। The PS4 is currently not operational, though it is in the coasting phase, which will continue for 425 seconds in all. Vehicle performance normal. The PS4 stage, when it ignites, will continue to burn for 247.5 seconds. Thereafter, the injection parameters of the spacecraft XPoSat will be achieved. After injection of the primary satellite, PS4 has yet another milestone to accomplish. It lowers to an orbit of 350 kilometers. After XPoSat injection, this orbit will be at 9.6 degrees inclination, which is achieved through 2 restarts. These maneuvers are expected to take 83 minutes from the XPoSat injection. Once in the new orbit, PS4 will be subjected to passivation by venting remnant propellants and depressurizing the stage tanks. Thereafter, the control of stage is transferred to POEM avionics. Vehicle performance normal. There are 10 payloads in POEM, 7 of which are finalized through in space. Speaking about the payloads that Plus 12 minutes. POEM carries, Radiation Shielding Experiments Module RSEM is designed by a firm called Take Me to Space for evaluation of effectiveness of tantalum coating. The second payload, Women Engineered Satellite or VSAT for solar irradiance and UV index from LBS Institute of Technology for Women. Third payload is an amateur radio satellite, BeliefSat-O from KJ Somaya Institute of Technology. Fourth payload is again a CubeSat called Green Impulse Transmitter from Inspacity Space Labs Private Limited. LEAP TD from Dhruva Space Private Limited to demonstrate subsystems for microsatellite. 2 payloads are there from Peletrix Aerospace Private Limited, which are named Rudra 0.3 HPGP and Arca 200. 3 more payloads are from ISRO. The one from Physical Research Laboratory is called the Dust Experiment. 2 more from Vikram Sarabhai Space Center. One will be called as Fuel Cell Power System and the other is silicon-based high energy cells. These are the payloads from ISRO. जहाँ भारत में सभी नववर्ष के स्वागत के लिए जश्न और मनोरंजन में लगे हुए थे, वहीं इसरो के वैज्ञानिक पीएसएलवी C58 प्रमोशन की तैयारियों में जुटे हुए थे। इनकी गतिविधियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए थे। सफल मिशन के ध्येय से सराबोर इसरो के वैज्ञानिक इस वर्ष का आरंभ खगोलीय समझ को और बढ़ाने के उद्देश्य से पीएसएलवी C58 के प्रमोशन में कार्यरत हैं। वर्तमान में यान की ऊंचाई 516 किलोमीटर।
एक्सपोसैट की अंतक्षेपण की कक्षा 650 किलोमीटर के करीब होगी। वर्तमान में सापेक्ष गति 6.86 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस उपग्रह एक्सपोसैट के दो मुख्य नितभार हैं। पोलेक्स, यह 8 से 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा बैंड में खगोलीय प्रेक्षणों के लिए एक एक्सरे ध्रुवणमापी है। इस नितभार को यूआरएससी और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इस यंत्र में एक कॉलीमीटर, एक प्रकीर्णन और 4 एक्सरे अनुपातित काउंटर डिटेक्टर लगे हुए हैं। इस प्रकीर्णन को कम परमाणु द्रव्यमान वाले पदार्थ से बनाया गया है, जो आने वाली ध्रुवीकृत एक्सरे का विषमदैशिक थॉमस प्रकीर्णन करता है, ताकि एक समय में इस कॉलीमीटर के दृष्टि क्षेत्र को 3/3 डिग्री से सीमित किया गया है, ताकि एक समय में एक ही स्रोत उज्जवल हो सके। इस नितभार के 5 सालों के जीवन काल में 40 चमकीले खगोलीय स्रोतों का प्रेक्षण करने की अपेक्षा है। यह मध्यम एक्सरे ऊर्जा बैंड का पहला नितभार है जो ध्रुवण मापन के लिए समर्पित है। इसके अलावा एक और नितभार एक्सस्पेक्ट एक एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग नितभार है जो एक्सपोसैट में जा रहा है। यह सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रम में त्वरित समय तथा संवर्धित स्पेक्ट्रम विभेदन प्रदान करेगा। यह पॉलिक्स का डेटा को इस्तेमाल करते हुए निरंतर उत्सर्जन में वर्णक्रमीय स्थिति परिवर्तन, लाइन फ्लक्स और प्रोफाइल में परिवर्तन, 0.8 से 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स रेंज में उत्सर्जन की लंबी अवधि में निगरानी कर सकता है। व्हीकल परफॉर्मेंस नॉर्मल। इसमें कोलीमीटर का उपयोग पृष्ठभूमि को कम करने के लिए एक्सस्पेक्ट के दृश्य क्षेत्र को कम किया गया है। एक्सस्पेक्ट विभिन्न स्रोतों जैसे एक्सरे, पल्सर, ब्लैक होल, लो मैग्नेटिक फील्ड, न्यूट्रॉन स्टार और मैग्नेटार्स आदि खगोलीय स्रोतों का निरीक्षण कर सकेगा। कोस्टिंग फेज समाप्ति की ओर। Stage engine started. There's a confirmation that the 4th stage has commenced its operation. We are Plus 17 minutes. 17 minutes into the launch. Current altitude is 606 kilometers. 4th stage performance normal. चतुर्थ चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित इंजन है, एमएमएच और मॉन ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हुए यह 14.66 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। इसमें ऐसे 2 इंजन लगे हुए हैं। वर्तमान ऊंचाई 615 किलोमीटर, सापेक्ष गति 6.7 किलोमीटर प्रति सेकंड। चतुर्थ चरण व अंतिम चरण है जो उपग्रह के अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त कर उपग्रह को उद्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित करेगा। The 4th stage is based on liquid propellant. The propellant loading is 1.6 tons. The fuel is monomethyl hydrazine and oxidizer is mixed oxides of nitrogen. Presently, the tracking stations at Brunei and Bayak are tracking the launch vehicle. चतुर्थ चरण को पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि यह कक्षा में कुछ दिन उसी कक्षा में रहते हुए प्रयोग के लिए उपयोग में लाया जाएगा। एक्सपोसैट उपग्रह का प्रक्षेपण 650 किलोमीटर की चक्राकार कक्षा में किया जाना है। इसके पश्चात चतुर्थ चरण को बंद कर दिया जाएगा तथा कुछ समय बाद पुनः प्रज्वलित कर यान की कक्षा को कम किया जाएगा। यह 650 किलोमीटर से 350 किलोमीटर की कक्षा पर लाया जाएगा तथा यहां ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट्स का प्रयोग शुरू किया जाएगा।
4-stage performance normal. सभी बेसब्री से इंतजार करते हुए कक्षीय स्थितियां प्राप्त होते ही उपग्रह एक्सपोसैट को अंतक्षेपित किया जाएगा। The fourth stage of PSLV currently thrusting. Plus 20 minutes. PSLV C58 के चतुर्थ चरण PS4 को त्रैअक्षीय स्थिर कक्षीय मंच के लिए तैयार किया गया है। इस मंच से कई महत्वपूर्ण और नवीन अंतरिक्ष प्रयोगों को कार्यान्वित किया जाएगा। इसमें सोलर पैनल्स लगे हुए हैं जो कि 50 एम्पियर आवर के लिथियम आयन बैटरी को आवेशित करते हैं। इसमें नेविगेशन गाइडेंस कंट्रोल और टेलीकमांड कक्षीय आवृत्ति नियंत्रण तंत्र जैसे एवियोनिक सिस्टम भी लगे हुए हैं। यह पोयम की श्रृंखला में तृतीय प्रयोग है। We are very close to the scheduled XPoSat injection time. जी हाँ, लगभग कक्षीय स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। अब किसी भी क्षण एक्सपोसैट को कक्षा में अंतक्षेपित किया जाएगा। चतुर्थ चरण को निर्धारित रूप से बंद कर दिया गया है। Satellite injection conditions are achieved. Eagerly awaiting the next event. उचित अभिवृत्ति प्राप्त करते हुए यान तत्पश्चात एक्सपोसैट को अंतक्षेपित किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य के प्राप्त होने के पश्चात प्रयोगात्मक क्रिया जारी रहेगी। Satellite separated. And there is a confirmation that the XPoSat satellite has been separated. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर द्वारा। एक्सपोसैट को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है। But mission is continuing for PS4 orbit platform experiment, that is POEM 3, with 2 phases of 4-stage restart. After 2 phases of restart, PS4 stage orbit will be changed to 350 km circular. The first phase for PS4 restart happens in non-visibility period. The second phase of PS4 restart takes place in the visibility period of Trivandrum in orbit 2. During the non-availability period, ground trace will be updated by extrapolation on the video wall. The non-visibility period is approximately 4,500 seconds. All the stations involved in operation shall continue in positions. Handing over to mission director. आपने ऑनबोर्ड कैमरे की मदद से देखा एक्सपोसैट और यह खूबसूरत पृथ्वी का नजारा। Has injected XPoSat primary satellite into the desired orbit. We will be continuing the operations. 2 more PS4 restarts are planned, and the POEM 3 operations will be following. Approximately, the T0 will come around 2 hours after liftoff. Thank you. अब इसके पश्चात हम आपको अध्यक्षीय संबोधन के लिए ले चलते हैं और हम आपसे आज्ञा लेते हैं। First day of the year, first launch mission for ISRO. This success matters much more in view of the rich data that XPoSat will give to the scientific community in the field of astronomy. Congratulations, Team ISRO. Do stand by for the address by Secretary TOS and Chairman ISRO, Sri S. Somnath. We take leave from you. Goodbye.
So Happy New Year to all of you. So on 1st January 2024, yet another successful mission of PSLV has been accomplished. PSLV C-58 has placed the primary satellite XPoSat in the desired orbit of 650 kilometer, 6-degree inclination. And we'll be waiting for the exact orbital parameters that will just now come. And we are also waiting for the satellite to have its solar panel deployed. That also will come in a few seconds from now. From this point, the orbit of the PSLV 4th stage will be reduced to a lower orbit, where the upper stage of the PSLV, which is now described as POEM, PSLV Orbital Experimental Module, will carry out experiments with 9 of the onboard payloads. And that will take some time, and we will come back to listen to all of that, what happened in the POEM experiments little later. Meantime, let me also announce the orbit that has been accomplished, which is available through various routes. It shows excellent orbit, and the deviations from the targeted orbit is hardly just 3 kilometers in circular orbit of 650 kilometer, and inclination is 001 degree, which is one of the very excellent orbital condition. And yet another announcement is the solar panel of the satellite also has been deployed successfully. So with this, the new year has begun with the launch of PSLV. We have an exciting time ahead. Much before telling all of that, let me invite the mission director to have its words. Mr. Jayakumar is the mission director. Okay. Thank you, sir. I'm extremely happy to stand here to celebrate the grand success of the 60th launch of PSLV. As you all know, XPoSat is a space observatory, but what makes this mission more interesting is the host of new technologies that are getting demonstrated in the POEM-3 experiment. We have fuel cell, we have the silicon-based 10 ampere hour high-energy battery, green monopropellant thrusters, amateur radio satellite service, and more important, a totally women-engineered satellite for the comparison of solar irradiance and UV index. This, I think, showcases women empowerment in the field of science and technology, and all the payloads, in fact, demonstrate the reforms that are currently sweeping the Indian space sector. But today's success has been made possible by the tremendous efforts put in by a whole group of people from Team ISRO, along with other stakeholders. This mission would not have been possible but for the wholehearted effort put in by various teams, the SDAs and SR agencies spread across different centers, starting from SDSC, URSC, STRAC, LPSC, IPRC, VSSC, IISU, LEOS, and also ISRO headquarters. I would also like to thank InSpace for acting as a nodal agency in identifying the payloads for POEM-3 and all the NGEs for delivering the various payloads adhering to our schedule. Let me also thank our industry partners for delivering quality products for the realization of the launch vehicle. Let me take this opportunity to thank Chairman ISRO for the mentoring and the guidance provided, and all center directors. Specifically, I would like to thank Chairman and members of MRR, FRR, LV, and ORC, Padmamar sir, Ashok sir and Shuja sir. They have taken extensive reviews, and all the DRTs for clearing the various systems, also the admin and the auxiliary services who have supported. I would also like to thank my own project team, especially Vehicle Director Damodaran, Associate Vehicle Director Joyce Jose, all the DPDs, the other team members, and the Project Management Office who has been effectively managing the campaign activities. Finally, I thank our family members for the support they provided to make our missions successful. Wishing all of you a happy and a successful new year. Good day. Jai Hind. Now the satellite director. Good morning all. As Chairman sir announced, I'm happy to announce that satellite is placed in intended orbit flawlessly, and satellite health is normal, solar panels are deployed, and battery charging already started. And this is the unique mission, XPoSat. It is a unique mission, and this is